In some areas of Pakistan, many children suffering from a disease called microcephaly are deprived of basic human rights. In this video, we are going to unveil the violation of their rights. But first, let us understand what microcephaly really is and what are its causes. Kindly introduce yourself. I'm Dr. Samra Naz, and I have been working as a primary care physician for the past 6 to 7 years. So I'm Dr. Abdullah Riaz. I'm one of the general pediatrician currently working in Basildon University Hospital, UK. I do have experience from Pakistan, Republic of Ireland, and UK. What is microcephaly and how it is defined medically? Okay, so microcephaly is composed of two words, micro and cephaly. Micro, as you all know, means small, and cephaly means skull. So basically, microcephaly means a small skull. So microcephaly is a sign of a disease. So there can be any underlying disease behind that, which could be birth related, which could be metabolic condition, which could be something infection related. What are the common symptoms and signs of microcephaly in infants? Okay, so first of all, when a child is born, he has some regular checkups every month or every 2 months, every 3 months by a pediatrician. And the first thing that the pediatrician checks are his head circumference. The head circumference is checked to see if the skull is growing enough, and if the skull is growing enough, is the brain developing, adequately. So, are there any treatments or interventions available for microcephaly? So treatments are mainly for the underlying disease. You treat infections, you treat metabolic conditions, whatever is the cause. If microcephaly is purely related with the bone growth problems, skull bones, then it's the surgical intervention. But most of the times, in majority of the cases, it's usually treatment for the underlying disease. okay, so sometimes microcephaly may not cause any symptom or sign in a child. Like sometimes, even if the skull is small, the brain is adequately developed. So those children, they do not need any treatment because they're living a routine, normal, regular life. But when a child is mentally and physically retarded, or he is not growing or developing enough, then you may need speech therapies, occupational therapies, or behavioral therapies to make them as normal as you can. But this is only a management. There is no cure or proper or a specific treatment for it. Thank you so much, Mr. Riaz. I want to extend my heartfelt thanks to you for. Thank you so much for all these questions. I really appreciate you people. Thanks a lot. To further understand microcephaly and its consequences, we talked to a family whose son is suffering from the disease. मेरा नाम मोहम्मद अफजल है। मैं गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल टीचर हूँ। उम्र मेरी 57 ईयर्स है। आपके कितने बच्चे हैं और आपका जो स्पेशल चाइल्ड है ये कब और कैसे पैदा? मेरे 5 बच्चे हैं, जिनमें से 2 स्पेशल हैं और 3 नॉर्मल हैं। आम जिस तरह नॉर्मल डिलीवरी होती है इसी तरह इनकी डिलीवरी है। इस बच्चे की पैदाइश से लेकर आज तक आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? किसी किस्म की कोई मुश्किलात नहीं है, नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला की देन है ये। इस बच्चे के बहन भाई और रिश्तेदार या मोहल्लेदारों का इसके साथ कैसा रवैया है? बहुत अच्छा रवैया है। अगर ये उनके पास नहीं जाता तो वो खुद इसको घर पे लेके जाते हैं आके। आप जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा हो रहा है और आपकी उम्र ढल रही है, तो इसके मुस्तकबिल के बारे में आप क्या सोचते हैं? इसके मुस्तकबिल के बारे में यही है कि अब मेरी अपनी रिटायरमेंट है, तो मैंने ये सोचा हुआ कि इसके लिए कोई ना कोई प्लाट एक लेना है और फिर जो इसको संभालेगा वो प्लाट का मालिक होगा। आपके ख्याल में इन स्पेशल बच्चों की बेहतर परवरिश के हवाले से क्या इक़दामात उठाए जाने चाहिए? इत्मीद यह है कि इनकी जो ज़रूरियात है उसका ख़ास ख्याल रखा जाए और इनकी ख्वाहिशात जो उनको पूरा किया जाए। जैसे कि हम इसकी हर लिहाज से इसकी केयर करते हैं, इसकी कोई चीज़ ये डिमांड करते हैं इसकी पूरी करते हैं बाकी बच्चों की निस्बत। ये अल्लाह ताला की एक ख़ास नेमत है और इसका अजर अल्लाह ने ही देना है। In some areas of Pakistan, these people are considered sacred, and people believe that if they donate to them, their prayers will be answered. A mafia group uses these false beliefs of the people to turn these children into beggars and earn money for themselves. To complete our mission of unveiling the violation of the rights of the so-called rats of Dolay Shah, we visited the base of all this activity, the shrine of Shah Dola in Gujarat.
people inside the shrine were hesitant to talk to us as we had a camera. We asked someone from the management about the mistreatment of the rats of Dolay Shah and were able to secretly record his response. अच्छा एक यहाँ पर एक चीज़ और मशहूर है जो डोले शाह के चूहों के हवाले से कुछ मशहूर है ऐसा ये लोग सच में इख्तलाफ है। अच्छा मैं झूठ बोलूँगा वो भी गलत है। मैं अगर सच बयान करूँगा तो वो मेरे लिए नुकसान है। मैं इसलिए इससे ज़्यादा बता नहीं सकता। अच्छा This clearly proves that the children are mistreated. They are also left by their families, kidnapped or bought on rent. अल्लाह ताला हमारे घर औलाद दे पहला जो बच्चा होगा वो आपके दरबार पर चढ़ाएंगे। हमने खुद अपनी आंखों से देखा 2 बच्चों को यहाँ पर लेकर आते हैं तो छोड़ के चले गए वो चले जाते हैं यहाँ तो ये फिर बच्चे कहाँ से आते हैं ये जिनके घरों में होते हैं ना उन्होंने दिहाड़ी पे लिए होते हैं वो बच्चे तो फिर इनका हवाला दे के वो उनसे मांगते हैं इनका उससे ताल्लुक कोई नहीं है नहीं नाम इस्तेमाल हम उधर होते हैं हमें पैसे दें ये वो आपकी दुआ कबूल हो जाएगी ये वो ज़्यादा औरतों को तो ये बच्चे इनको मिलते किधर से हैं ये जो ये इनके अपने ही बच्चे होते हैं या ये कहीं से उठा के रेंट पे लेते हैं We also met a man outside the shrine who told us that the rat that used to be here was a dervish and died due to choking on food. शाह के चूहों के हवाले से एक बात मशहूर है उसमें आपका क्या अकीद है उसमें क्या है वो सच है ये मेरी बात सुनो दरबार चूहे आते हैं अब जो अंदर शाहदौला पे के अंदर चूही थी ना वो दरवेश थी लोकी आंदे ने खुशी नाल जांदे ने तेरे थप्प छप्प ला के टुट जाते हैं ते दरवेश सी वैसे ते वो फोत हो गई इस टाइम ते वो बस उन्हें ना बुरकी दा भोला शोला मुंह च पाया भी पूरी माशाल्लाह उम्र भी 85 साल की उम्र है सी बस इतना ने काम वक्त आ गया But an old man told us the other side of the story. ਅੱਗੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈ ਸੀ ਚੂਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਰੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਫਨਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੰਦ ਕੱਢੇ ਕੱਲੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਦਾ ਨਵਾਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਉਹ ਮਰ ਗਈ This also clarifies that these children are also beaten and physically abused. We also met a rat of Dolay Shah with his caretaker, but when they saw the cameras in our hand, they ran away. In the end, we would like to say that this issue is a matter of great concern and needs to be addressed immediately. These children also deserve to live a happy family life just like ours.